चले आया कि नहीं आया? Yes. Yes. सबका जय यीशु। So good evening. I am Father Matthew. वैसे तो ये बाइबल स्टडी क्लास और लेटी ये बहुत साल पहले की या बहुत साल से मेरा एक ड्रीम था कि हमारे डायसिस में भी ऐसे एक स्टडी सेल हो जिससे लोगों को बाइबल के बारे में जानकारी मिले। और खुशी की बात है कि फिलहाल हमारे डायसिस में 2-3 बाइबल स्कॉलर्स हैं। फादर सिस्टर सायुज्या जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, फादर सैव्यो जिन्होंने बाइबल स्टडी की जेरूसलम से डॉक्टरेट की, और फादर अभिष, ये तीनों अब हम लोगों को या आप लोगों को मदद करेंगे। आज बाइबल के इंट्रोडक्शन के जनरल इंट्रोडक्शन टू न्यू टेस्टमेंट के बारे में सिस्टर सायुज्या हमें बताएंगे। और उससे पहले मैं सिस्टर सायुज्या के बारे में शुरू शब्द कहने से आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। सिस्टर सायुज्या belongs to the congregation of FCC, Franciscan Parish Congregation, और भोपाल प्रोविंस के सदस्य हैं, जिन्होंने स्टडी की रोम में जिनका लाइसेंशिएट यानी मास्टर्स और डॉक्टरेट दोनों उन्होंने वहाँ के ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी जो कि जेसुइट कॉन्ग्रीगेशन का यूनिवर्सिटी है, इट्स क्वाइट फेमस, काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया में।
और उसके बाद what is your thesis? Okay. इंडिया रिटर्न करने का 2016 में सिस्टर की अपॉइंटमेंट हुई माता देई, जहाँ सिस्टरों के लिए एक थियोलॉजी है, वहाँ सिस्टर रही डीन ऑफ स्टडीज के रूप में 4 साल या, और इस साल या 2020 में सिस्टर वहाँ से लौटी। अभी कांग्रीगेशन का भोपाल प्रोविंस का कैंडिडेट्स की इंचार्ज है और कई थियोलॉजी में क्लास लेने जा रही है सिस्टर। तो हमारी खुशी की बात है कि सिस्टर आज ये क्लास लेने और हमारे डायसिस के लोगों को लेटी को मदद करने के लिए तैयार हुई है और आज हमारे बीच में है। डायसिस के नाम पर, यहाँ उपस्थित आप सबों के नाम पर मैं सिस्टर को हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आई हैंड ओवर द क्लास ऑन माय टू सिस्टर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Father Matthew. I thank God first of all for these chances and ये मौका, अच्छी मौका मुझे मिला है कि जो मैंने बाइबल के बारे में पढ़ा आपके साथ बांटूं। मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मिक्स इंग्लिश बोलूँगी। Today we will have a general introduction to Bible. We are supposed to have begin with the first part, how books have come. बाइबल के बुक्स, न्यू टेस्टामेंट के बुक्स कैसे आए, उसका फॉर्मेशन, उसका इंस्पिरेशन कैसे, सब के बारे में हम लोग बताने एक क्लास था, लेकिन शुरू नहीं किया। इसलिए जो सेकंड बात, उसका दूसरा बात जो है वो मैं अभी आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। इसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बाइबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, व्हेन द न्यू टेस्टामेंट इवेंट्स हैपन, नए विधान का जो भी घटनाएं घटी उस समय में कैसा सिचुएशन था, कैसा प्रिपरेशन था गॉड फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड, ईश्वर के साथ तरफ से क्या क्या प्रिपरेशंस थे, और उस समय का सोशियो पॉलिटिकल उस सिचुएशन कैसा था, और थोड़ा उनका बाइबल उस समय के इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और कुछ उनका त्योहार, फीस्ट, बिकॉज इन त्योहार के जो पहले पुराना विधान का त्योहार था, जूश फीस्ट था, उसको लेकर यीशु उसको एक नया नया अर्थ देते हैं। यीशु उसका पूर्णता होते हैं हर एक फीस्ट। इसलिए हम लोग इतना 3-4 बातों को हम लोग आज सुनेंगे। आप पूछ लेना, आपका जो भी प्रश्न है, डाउट्स है, तो पूछ लेना, बीच बीच में रोक सकते हैं। तो आज हम देखेंगे व्हाई वी पहले हम लोग ऐसे सोचे क्यों हमको इसको बिब्लिकल बैकग्राउंड जानना क्या जरूरी है। व्हाई वी वांट टू लर्न द बैकग्राउंड, when we know a person, we also like to know what are the backgrounds. Now, when we meet a person, we ask the name, we ask also where are you from, so we know a little bit of background of that person. That helps us to understand this person. So also the New Testament, नया विधान, हमारा good New Testament Bible, Gospels, this means Gospels, Acts of the Apostles, letters and Revelation, इसमें जो है उसका कौन सा कॉन्टेक्स्ट में आया है वो उसको जानना हमारे लिए, न्यू टेस्टामेंट को जानने के लिए और उसका अर्थ जानने के लिए, उसका कौन सा कॉन्टेक्स्ट में कौन सा आया है, कौन कौन सा टेक्स्ट आया है, वो समझने के लिए मदद करेंगे। तो our objective of the course is get to know the Bible. Now we just a general introduction, we look around, how the things have come into, so we get a familiarity with the events that happen, because there are many things whatever we have, जो भी हम लोग इसमें बोलते हैं, हम लोग न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल्स में देखते हैं, सुसमाचार में देखते हैं और लेटर्स में देखते हैं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट जानने से हमको उसका अर्थ और अधिक
अच्छी तरह से और गहराई से हम समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव क्लोज कोर्स का ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा बाइबल का बैकग्राउंड जाने। So Bible is a book that has come in for multiple socio-cultural background. ये ऐसा कई तरह का बैकग्राउंड में आए हुए हैं, उसका सोशल बैकग्राउंड से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, ये सब उसको प्रभावित किया है, उसका ऐसे प्रभावित किया और सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म किया ना। तो ऐसा कोई सी एक भी हुआ है। So there are at least three words when we confront us when we read the Bible. जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग इसमें कम से कम 3 हम लोग बोलते हैं, दुनिया और वर्ल्ड ना। वर्ल्ड वी कैन फाइंड कोई सी भी टेक्स्ट आप ले लो, गॉस्पेल या और एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स और लेटर्स, कोई सी भी ले लो, उसमें हमको 3 प्रकार के दुनिया बोल सकते हैं। ऐसा दुनिया वर्ल्ड वी कैन फाइंड 3 काइंड्स ऑफ वर्ल्ड। Let's see what are they. First of all, a world behind the text. ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके लिखने के लिए कुछ इसका पीछे कुछ घटनाएं था ना, संभव था। तो उसको जानना क्यों ऐसा हुआ और क्या हुआ असली में क्यों, what did actually happen, what did happen that day, that time। तो हम लोग गॉस्पेल में देखेंगे तो यीशु का समय, तो यीशु का जन्म, यीशु का मिनिस्ट्री, तो उस समय में क्या सिचुएशन था, उस सिचुएशन में कैसे यीशु का teaching, no? Jesus teaching was there. So what was the thing that happened at that moment? Original context, in the original context with the actual audience. Jesus has his own first-hand audience, no? Those who were listening to him. So actual audience with actual audience and actual characters, what happened. So that is the word that tells us. For that we need to go behind the text. So we have to go behind what is there, what has happened before in this when the text event took place. Now after some time, the book was no book of the New Testament was written at the time of the event, ना? कोई भी बुक ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिस समय उसका संभव घटना घटी थी उस समय में कोई भी बुक लिखा हुआ नहीं था, है ना? हुआ था did Jesus write something? No. At Jesus' time, did apostles write something? No, nothing. No. After many years, so there were audiences. For Jesus, there were audiences, and after the Jesus event, there were audiences when the apostles were preaching Jesus' life. No? So that was. So it helps us to when we understand that those events, it helps us to understand, because we are almost 2,000 years, more than 2,000 years back to the event. ना? हम 2000 साल के ऊपर है, उसके बाद में आए हैं, तो हम लोग उसके 2000 पहले का दुनिया को देखेंगे तो हमारा क्या अंदाज होगा ना, हम नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते हम। इसलिए sometimes some of the text when we hear they look sometimes it may look absurd, sometimes they look like odd, क्योंकि ये दूसरा एक कल्चर था ना, दूसरा एक सिचुएशन था। तो इसलिए उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड में जाके समझना जरूरी है। नहीं तो हम लोग what happen many times when we study a text, we pull out the text from the context ना। कभी ऐसा ज़्यादातर हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बाइबल का जो एक टेक्स्ट को उसे कॉन्टेक्स्ट से बाहर लेते हैं, तो उसका पूरा अर्थ नहीं मिलता है हमको इसी कारण से। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। तो हम लोग today's class is somewhat a kind of knowing the background of the world behind the text when I say the Bible, okay, बाइबल का behind इसका पीछे क्या हुआ था, मतलब बाइबल का इवेंट क्या था। फिर दूसरा एक है a world within the text, ये जो है हमारे सामने जो किताब है ना,
So हमारे सामने जो हमारे hand में, in our hand what we have is the text, isn't it? And in that text itself, it's a world, and it presents a world before us. It speaks in different literary styles, and उसमें कुछ parables है, कुछ stories है, कुछ discourses है, और कुछ घटनाएं हैं, कुछ narration है. तो ये हमसे कहते हैं. वो जो घटना जो घटी थी, उसके बाद में जो सुसमाचार या लेटर जो लिख रहे हैं, उन लोग उसके बाद में उसका रिफ्लेक्शन करते हुए लिखा हुआ है ये इवेंट. So Bible is therefore it's not a history, but it is a faith interpreted history. Now, a history that is interpreted in the light of faith. It's a book written from faith for faith. It's a book that is written as it is a faith document. Bible is not a biography. Bible is not a autobiography. It is a faith document. It is not a literature. It is literature partly, yes. But the purpose of writing Bible लिखने का एक मतलब ये नहीं literature लिखे. इसका मतलब एक faith document. It comes from faith, means from the faith of the apostles. जो शिष्य था, यीशु का शिष्य, और उसके बाद में जो पहले कलीसिया में जो भी थे शिष्यगण हैं, उनका विश्वास के उन लोग कैसे यीशु का इवेंट को उनके यीशु जब जीवित था, हमको मालूम है शिष्यों ने पूरा समझा नहीं है ना. बाद में इसके बाद में कैसे उनके जीवन में यीशु का पुनरुत्थान के बाद में पुनरुत्थान का लाइट इन द लाइट ऑफ रिजरेक्शन के पुनरुत्थान का what we call in the light of resurrection, they were looking back to the events and they are applying this into their life. तो वो देखते हैं अगर यीशु था तो क्या इस समय में क्या उत्तर होगा. So therefore the author is writing with a purpose. और जो लेखक है न्यू टेस्टामेंट का, उसको एक पर्पस है. मतलब वो उसके सामने वो ऐसे ही एक किताब लिख रहे नहीं है, उसमें उसका सामने कुछ audience है, particular audience. That audience has got a history, as a background, a context, ना. वो जो उस समय में जीवित है, वो सुनते हैं उनका लिखना, उनका मैसेज जो सुनते हैं, वो actual people in the context of their life situation, in the life context and situations, ना. So उनका जीवन में उनका जो जीवन का जो दैनिक कार्य है, उनका जीवन का मुसीबतें हैं और प्रश्न, उनके जीवन जिंदगी में विश्वास के बारे में जो प्रश्न आते हैं, उसको उत्तर देते हैं और लेखक. If Jesus was there, how he would have answered. So in Jesus event they are recording. So that the second world present before us author's intention. Why did he say? To enliven our faith. हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए, और उनका विश्वास हमें हैंड ओवर करते हैं उनके द्वारा. यीशु को कैसे उन लोगों समझा, उनको देखा, उनको कैसे समझा, उनको कैसे सुना, वो हमको हैंड ओवर करते. तो उसको लेखक का second word is that a word in the text. Therefore this first and second word give a lot of information, more than, let's say, 3/4 of the information, the message we get. But then there is one part left, that is the world before the text. That is our context. Today, what this Bible is telling us, without doing that part, आज हमसे पवित्र वचन क्या कहते हैं, पवित्र वचन कैसे जीने के लिए, हमारा कॉन्टेक्स्ट में जैसे उनको प्रश्न था, प्रॉब्लम्स था, डिफिकल्टीज था, वैसे हमारा जिंदगी में भी है ना, है कि नहीं है? Actually problems we face also, no? Yes or no? Yes. Yeah. So then Bible tell us how to answer our situations, our troubles, our issues, our problems in the light of faith. So their purpose also is that we may answer our life questions in the light of faith, in the light of Jesus event. Okay? So we have to apply the word of God, what we have understood in our context. If that is not there, ये नहीं हुआ तो word of God हमने हमारा context में, हमारा जिंदगी में अप्लाई नहीं किया तो हमको इसका
पूरा पूरा इसका लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं, इतिहास किताब नहीं पढ़ते हैं, लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, हम विश्वास डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं ना, a document of faith. So we have to apply it in our life. So these three words, a contextualization, an older context, a context in the actual context of the event happened, a context that is presented in the text, and तो इसलिए हमको पूछना है ये पहला वर्ड में इसमें एक्चुअली क्या हुआ उस समय में। सेकंड में हमको पूछना है क्या इसका ये लिखने का मुझसे क्या बोल, ये टेक्स्ट ना, ये टेक्स्ट मुझसे आज क्या बोलते हैं, टेक्स्ट मुझे बाइबल का ये वचन, ये टेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो हमें क्या कर बताते हैं। और तीसरा हमसे बोलते हैं ये टेक्स्ट को हम कैसे जिए आज। ये पूरा ये तीनों होने पर हमारा बाइबल का अंडरस्टैंडिंग रादर good. Okay, so all three we need. There is one more meaning we can understand, a fuller meaning. A fuller meaning is यानी पूरा अर्थ, यानी ये बाइबल में एक टेक्स्ट है वो दूसरा कहीं पर उसके बारे में लिखा हुआ है। न्यू टेस्टमेंट का जो घटना है यीशु के बारे में कई भविष्यवाणी थी ना पुराना विधान में बहुत भविष्यवाणी है, तो वह हमें बताते हैं, ये समझने के लिए वो टेक्स्ट हमें मदद करते हैं। और ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत कुछ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यिर्मयाह नबी कहते हैं कि 31 अध्याय 31 में कहते हैं न्यू कवनेंट गॉड इज मेकिंग। सो बट नबी नहीं कहते हैं कैसे ये न्यू कवनेंट आएगा, लेकिन वो हम देखते हैं नए विधान में। So to understand the prophets, to understand the text of the Old Testament, we need a New Testament. And New Testament also to understand. If we look only New Testament, our understanding of Jesus cannot be complete, because Jesus is from all this context. God has been preparing all this, no? So this type of understanding, learning one text with other text, for understanding one text with other text is called a fuller meaning, learning the fuller meaning. ये इसलिए इसके लिए हमको करना चाहिए, बाइबल का एक कंटिन्यूअस रीडिंग होना चाहिए। बाइबल हमें सिखाएंगे कि एक भाग पढ़ते समय हाँ इसको मैं कहीं और पढ़ा है ना, तो उसको नोट कर लेना, तो इसका अर्थ हमें वहाँ बता देंगे। और वहाँ के अर्थ जो है पढ़ते समय नहीं समझा होगा तो यह यीशु ने कुछ बताया इसके बारे में, नहीं तो न्यू टेस्टमेंट में कहीं हमने कुछ पढ़ा है, तो सर्च नो, सो सर्च such meaning that will help us to understand better, no, fuller meaning. Now I just want to know how much what did we deal just now? हम क्या बता रहे थे अभी? Just want to check whether it is okay with you or can I go forward? We have now heard how to understand Bible. Yes. On the situation which was earlier, Yeah. the situation which is now, Yes. and the situation which is ahead. Yes, exactly. Three terms. So three Yeah. situations we have to cover Yeah. in order to understand Bible. what the Bible means. What Then is one more, something more, some other. The background we understood like how it was earlier, and that the like complete interpretation of Old Testament, what all the prophecies has been done, and we see the same thing in the New Testament. Yes. So that is a search for fuller meaning. Fuller. Anything else? Somebody else? This side also? Same. So the one thing which I have understood today is that fuller meaning you are saying we have to read the text in context of the Old and New Testament. Yes. So many things will come out. Yes, yes. So what the Old Testament says is coming in the New Testament, because Old Testament is a preparation for the New Testament. God has been preparing all this. As we read the book of Hebrews chapter 1, God has been speaking to the humanity in various ways, and finally He spoke to His Son. So what comes in Jesus is the full revelation or deeper understanding of what has been said there. So therefore, what we need is we need to understand those texts
need to read. Therefore, I would recommend you to start a continuous reading of the Bible. How can we start? Because in the class we will be able to give only very little, no? हमारा देखो हफ्ता में 2 हफ्ता में एक क्लास है 4 hours हमें मिलेगा 4 hours एक महीने में मिलेगा इसमें बहुत कम हम पढ़ते हैं लेकिन we will give you some tips and then you start reading, okay? So that is I would suggest you मेरा एक सलाह है कि आप न्यू टेस्टमेंट से स्टार्ट करके कंटिन्यूअस रीडिंग करना बिकॉज इट इज इजी बिकॉज न्यू टेस्टमेंट वी नो हमको बहुत परिचय है उसमें लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट व्हेन इट कम वी हैव सो मेनी डाउट्स सो पहले हम लोग न्यू टेस्टमेंट पढ़ के एक बार हो गया तो ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत जो डाउट्स आएगा वो इधर जो हमने पहले पढ़ा है इसलिए क्लैरिफाई होगा सो मैथ्यू से लेकर हम पढ़ाई शुरू करें Okay? You can keep some chapters, you can find some time. If you have no Bible always with you now, you can download an app in your mobile and in your free time you can read. I used to read in the bus, in the bus stand and you know. So we can fast, we can finish that will help you to understand the text. हम लोग ऐसे पढ़ते समय इसलिए हमको another thing. Reading the Word of God is it's anointing from the Spirit. We become daily. We are anointed by the Word of God. So at least a half an hour we spend for this. Maybe at that you don't get, but you can get here and there sometime. So तो पढ़ेंगे तो न्यू टेस्टमेंट से लेकर शुरू करना मैथ्यू से लेकर रेवलेशन तक पढ़ना इसके बाद में जेनेसिस से पढ़ना तो हम शुरू करेंगे इस हफ्ता से ना आज से थोड़ा एक चैप्टर 2 चैप्टर जैसा पढ़ लेना तो वही आप ये फुलर मीनिंग समझने के लिए नाउ व्हेन यू कम टू क्लास जब आप लोग आ रहे तो आपको कुछ डाउट्स है पूछना है तो आप पूछ सकते हैं तो जितना हमसे हो सकता है पूरा जो भी डाउट्स है उसका पूरा शायद हमको नहीं मालूम होगा फिर भी जो भी हमारे मुझे कर सकता है आंसर कर सकता है खुदा मैं इंकरेज करूंगी इसलिए यू आर वेलकम टू आस्क योर डाउट्स बिकॉज देयर मे बी सो मेनी डाउट यूजुअली व्हेन वी गो फॉर क्लासेस बाइबल क्लासेस स्टूडेंट्स हैव गॉट सो मेनी डाउट्स बिकॉज सम मिसइंटरप्रिटेशन मिसअंडरस्टैंडिंग ना इसके कारण से तो आप यू आर वेलकम इन द क्लास और आउटसाइड क्लास यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड ओके So we go forward. We look into the historical context of the New Testament. Bible का ऐतिहासिक background ना हिंदी. So कैसा आ गया? Bible is not a history book पहले मैंने बताया एक history book नहीं है, but it records some history of its time. जो उस समय में जो हुआ था उसका history भी उसमें है लेकिन उसका लेखन का अर्थ ये नहीं था कि मतलब ये नहीं था कि वो एक इतिहास किताब लिखे ना it records some history of its time and the main concern biblical authors का main concern जो था कि वो faith document write a faith document that leads you to faith okay so in the Gospel of John ends with this has been there are many more things that Jesus done no यीशु बहुत काम कार्य किए हैं लेकिन इतना जो लिखा है क्या के लिए लिखा है पता विश्वास में there when we read हम लोग जब आप लोग उसका ग्रीक टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े तो उसमें ऐसा कहता है ये इसलिए लिखा गया है कि that you may come to faith and you may continue faith यानी आप विश्वास में आए और विश्वास में क्या बढ़ते जाए बने रहे तो हमेशा बने रहे तो this is the purpose of writing the Bible okay क्या था purpose to it is written ये लिखा है कि that you come to faith that you may come to faith and remain in faith so it's not enough that once we read Bible and forget no we need to
ग्रो, रोज रोज हम विश्वास में बढ़ते हैं। ये हमारा जिंदगी में हम जैसे जाने हमारा अनजाने ही ये हो जाता है जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं ना। Our thoughts are patterned according to the biblical thoughts. Our deeds are patterned according to the biblical thoughts. ना हमारा बाइबल का जो विचार थे उनके अनुसार हमारा thoughts, हमारा deeds, हमारा daily life is organized. So therefore it is very important that we have a continuous reading. So this is to lead you to faith and to keep you to grow in faith. The New Testament writings about Jesus and his disciples relate a story that is enacted on the stage. मानो ये दुनिया एक मंच है ना, वहाँ एक चरित्र, एक नाटक, एक ड्रामा बना था ना, किया था। ओ यीशु का लाइफ ना, Jesus is they are actual characters of the story, Jesus and the disciples and the people of that time. So we therefore इसलिए हमको ये नहीं कर सकते हम पूरा आंख बंद करके जो भी आया वो नहीं समझ सकते हैं। वो हमको इसलिए हमको जरूरत पड़ता है हम उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इनका बैकग्राउंड क्या है जाने। That will help us to understand Bible well. So because it deals with the actual history, actual people ना, real people के पास हिस्ट्री को उसका जीवन को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए हमको उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। देखो इसलिए हमको कभी मैप्स का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका देखने के लिए हम देखेंगे इसके बीच में। Let us see, जैसे बिफोर जीसस कमिंग टू यीशु दुनिया में आने के पहले ईश्वर एक प्रिपरेशन कर रहे, दुनिया को प्रिपेयर करते थे ना। तो यीशु आना हमने मांगा यीशु के आने के लिए, और हमने चाहा, हमने जाना भी तो नहीं है। So it was God's need ना, it was not our need. We were actually हमारा जरूरी था, लेकिन हम इतना ये समझ भी नहीं पाते थे कि हमको ये जरूरी है ना। So for our sake, God felt it was our need, and it was God's need that His Son be born in our world ना। हमारे दुनिया में हमारे लिए एक मुक्तिदाता आए, ये ईश्वर हमारे पिता हमारे लिए एक चाहा, इसलिए उसके लिए बहुत तैयारियां की। आप लोग के घर में, हमारा घर में जब एक नया बच्चा आने वाला है, वो तैयारियां करते हैं ना। तो ईश पिता बहुत अधिक तैयारियां किया जब तक यीशु का आना था ना। So one type of God prepared a world, the entire world to receive Jesus. We were not aware, हम नहीं जानते थे। In the time of the New Testament, Rome was the dominant world power, ना, world power. It was a सम्राट बोलते हैं, साम्राज्य। So ये दुनिया भर के उस समय समझते हैं ऐसा था कि दुनिया भर के रोमा साम्राज्य का उसका पावर है, उसका एक्सटेंशन है। लोग 5 प्रोविंस में दुनिया के कई एंशिएंट वर्ल्ड they were dominating. Said that even up to India, Rome had a trade, business, commercial relationship. So yet one who changed. So even though such a इतना बड़ा साम्राज्य था, the one who changed the world actually was born in a small village called Vigils. No contrast. Bible present before us so many contrasts. Contrast हिंदी में क्या होता है? Contrast इसका विपरीत। एक तरफ साम्राज्य है, लेकिन ईश्वर का पुत्र जब आया एक छोटी गांव में आया ना। सो इतना शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन ईश्वर चुन लिया एक छोटे गांव को, बेथलेहेम को। Saint Paul writes, but when the right time came, God sent His Son. A woman gave birth to Him. He was born under the authority of law. यानी he was under the authority of Old Testament, Old Covenant ना, पुराना विधान के। He was a very a righteous Jew from the point of view of Jewish ना।
So like that. So some God prepared. So there were many ways. कई तरह से ईश्वर इस दुनिया को तैयार किया. पहले मसीहा को स्वीकार करने के लिए पहला ही प्रिपरेशन था जूविश नेशन को तैयार किया ना. गॉड जूविश नेशन को प्रिपेयर किया. उसके बाद में जिसमें से यीशु आए, मसीहा आए. गॉड called Abraham, selected a people, a chosen people from whom, and he called them. He took them as their treasured possession. Treasured possession means what? बहुमूल्य कीमती कैसे उसको बोलते हैं? निधि. बहुमूल्य निधि. God chose his people and took them as a बहुमूल्य निधि के रूप में दिया. उसको from the Old Testament when we read, especially Genesis, Exodus, these books, Genesis, Exodus, and Deuteronomy, when we read the 5 books, we read how God was preparing, how God was after them, taking care of them, walking with them. ना ईश्वर उसके साथ चला, उसके हमेशा उस ऐसा लगते. ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे तो हमको ऐसे लगेंगे ईश्वर को और कोई कार्य नहीं था, बस इनके बारे में सोचना, इनके बारे में चलना, उतना ख्याल रखा ईश्वर ने. So God prepared and then he made them a priestly kingdom, holy nation, and made promises with Abraham to patriarch. Patriarch यानी क्या है? पूर्वज ना, पूर्वज अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनको बुलाकर उनसे एक विधान बनाए, उनके साथ विधान बनाया. केवल उनके लिए नहीं, अब्राहम से बताया था उनके लिए सारा देश दिया जाएगा ना, और इतना बड़ा जनता होगी उनसे. ये सब अब्राहम देखा नहीं देखा. ये उनके लिए नहीं दिया गया, लेकिन हमारे लिए, लेकिन जो उसके पीछे जो पीढ़ी आया उनके लिए और हमारे लिए तैयारी था ईश्वर की तरफ से मसीहा को स्वीकार करने के लिए, redeemer को. So these people became a channel. मार्ग एक चैनल हो गया ये ईश्वर को, ये रिडीमर को स्वीकार करने के लिए. जब हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे तो पूरा पुराना विधान पूरा हम देखते हैं. ये एक एक्सपेक्टेशन है, पूरा एक्सपेक्टेशन, प्रतीक्षा है. तो दिस एक्सपेक्टेशन it comes at culmination and realization in Jesus. इस्राएली जनता, उनके लिए land, kingdom, all these were promised, and the kingdom that will last forever. But in the nationalistic sense, they did not have anything. No, Israel came to be a minority, not a people, like a very very small minority, insignificant minority later, and they had lot of struggle. So whatever promises, big things God promised, land they lost, ना. तो जो भी उनके लिए प्रॉमिस किया गया वो उनके जीवन में एक होप था, एक होप यानी प्रतीक्षा था, आशा था. तो जो पूरा न्यू टेस्टमेंट का एटीट्यूड, उनका मनोभाव ना, यही है एक प्रत्याशा का. हमेशा एक जनता प्रत्याशा करने वाली एक जनता थी ओल्ड टेस्टमेंट पीपल. यस, यू हैव सम डाउट्स? ओके. So this is all that has, whatever is promised, come to fulfillment in Jesus Christ. Okay, so all these, whatever has come to fulfillment in Jesus, जो भी यीशु क्रिस्त में पूरा हुआ, उसका एक एंटिसिपेशन पहला दिया हुआ प्रोफेसी था, और इनका पहला दिया हुआ एंटिसिपेशन था ओल्ड टेस्टमेंट में जो भी है. Okay. And there were many prophecies, no? बहुत भविष्यवाणियाँ थी यीशु के बारे में. उसके लीनिए जो उसका जीनियोलॉजी भी हम पढ़ते हैं ना, ये तो ऐसे पढ़ते हैं. तो ये that so many preparations even in the Old Testament we can see. So but then we know people sinned and went away from God's
God's ways, ना जब जब ये जनता पाप करते ईश्वर के राहों से बाहर गया, विधान को टूटा दिया, तब भी ईश्वर ने अपना प्रोजेक्ट नहीं छोड़ा ना। ईश्वर अपना प्रोजेक्ट खाई उनका जो भी जनता बहुत कमजोर हुआ, यानी जो भी प्रॉमिस करते वो नहीं कर पाते थे, हमेशा वो पाप में गिर जाते थे, आइडल्स के पीछे जाते थे। लेकिन जो ईश्वर योजना बनाई थी, ये पूरी योजना ईश्वर ने उनका निश्चित समय पर पूरा किया ना। ये हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। तो जब इस्राएल जनता का नष्ट हो गया, वो हारा गया, उसका राज्य का डिस्ट्रॉय ना नष्ट कर दिया, और टेम्पल गॉड्स प्रेजेंस, लिविंग प्रेजेंस टेम्पल उसको नष्ट करा। उसी समय में भी और उसको बाबिलोन में लिया गया, एक्साइल प्रवासी के रूप में उनको बाबिलोन लिया गया। उस समय में भी ईश्वर एक छोटा रेमिनेंट बोलता है, एक छोटी झुंड को बनाया रखा, जिसके द्वारा वो जो ईश्वर में भरोसा रखते हैं, एक कमजोरी, एक छोटी झुंड, जिसके द्वारा जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा जो प्रतीक्षा करते हैं, जिसका प्रतीक्षा पूरा हो जाए यीशु में। तो ये हम देखते हैं आफ्टर इन द प्रॉफिट्स ना, बुक ऑफ प्रॉफिट, नबियों के किताबों में हम लोग देखते हैं 400 सालों के बाद 400 साल गए, बीते गए, और इसके बाद में बहुत ट्रेडिशंस जैसे आए, तो एक्यूमुलेटेड ट्रेडिशंस, और इस्राएल में एक फरीसीगण बहुत एक्सट्रीम तरफ गया, फिर भी बहुत हिपोक्रेसी आ गया। In spite of all this, God, there was an expectation for Messiah from this remnant. No, remnant means छोटे झुंड को ईश्वर जो बनाए रखा था, उसकी वो हम हमेशा मसीहा के लिए इंतजार करते रहेगा। We will have a break, short break, and afterwards we will continue.
So we continue. Yes, yes. Now, preparation through the Roman Empire. So Romans ruled Palestine at that time. No? Palestine, Roma, Samrajya ka, Palestine ka Rajya ka. Or this, they prepared a lot of things. They made easy for the spread of the good news. उसमें एक स्पेशल था पैक्स रोमाना. उनका 100 years में रोमा साम्राज्य में revolt means what is revolt? Civil war था, चल रहा था. इसके बाद में 100 years के बाद में पैक्स रोमाना, Roman peace was established. They put down the emperor, put down all the revolt, civil war. इसमें पूरे साम्राज्य में पीस, शांति बनाए रहे, उसको बोलता है पैक्स रोमाना, रोमन पीस ऑफ रोम. सो ये बहुत हेल्प था समाचार के लिए उस समय में. और बट Romans brought the pax on peace in Rome, or in the Roman provinces by army, no? आर्मी फोर्स के द्वारा है. एंड ये ऑगस्टस सीजर ना, उन्होंने बहुत कुछ किया अपने साम्राज्य में, अपने राज्य के समय में. इसलिए उसको लोगों ने कहने लगा son of God. God was born जैसे ना, एक ईश्वर ही जन्म हुआ. क्योंकि 100 years उसका अशांति था ना, सिविल वॉर था. इसके बाद में शांति आई तो बोले God is born. So actually in this time come the real son of God, no? ईश्वर जो असल में ईश्वर का जो सही में ईश्वर का पुत्र जो है, और ईश्वर जो है उनका समय में जिसे ईश्वर कहलाता था, उनके समय में ईश्वर का पुत्र या ईश्वर का जन्म होता है. Then so this again contradiction. I was telling you about a contradiction. No, they were making Roman peace in Rome with the help of sword, but the real peace, the birth of the Messiah brought peace to the world. No, peace to the world. That's what is announced by the angels. दूतों ने हमें सुनाया कि peace to the world. That's what Christmas announces. Or another contrast is this, that some God has been born. So this helped the presence of Roman rule and Roman law helped to prepare the world for the life and ministry of Jesus, for the preaching and for the later on preaching of the gospel. So ये facts from Roman rule, Roman law, नियम सब यीशु का जन्म के समय में बहुत मदद किया कि यीशु का वो सिचुएशन प्रिपेयर किया. और इसके बाद में यीशु का मरण के बाद में जब सुसमाचार फैला, उसके लिए भी ये बहुत मदद किया. जैसा कि पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द पैलेस्टाइन, जैसे उस समय में दिस वी विल स्किप बिकॉज वी हैव जस्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. So what I was telling about the Roman rule helped for the spread of the good news. First of all, you can see these lines there, no? Red roads. They are roads. The main 3 roads are there. Way to the land of Philistines, King's Highway, and way to Shur. There are 2 highways and many roads there. We can find 3 highways are there, and across the land, and both way there were ways. So that made easy for people to move. So that good news could be there is the Christians could move. When Pax Romana was that Christians could move everywhere. Travel was easy because of the rule. So this all helped. This Roman rule indirectly, they did in Roman साम्राज्य के लोगों ने ये सब किया उनका लाभ के लिए, लेकिन indirectly God was preparing all these for the coming of the Messiah and for the spread of the gospel. Okay, so that is.
Now, religious world at the time of the New Testament. When Christ was born, or later Christianity was born, the world was filled with the religions competing themselves. No? एक दूसरे से competition. Yeah, understand ना. So क्या competition में कि सबका एक problem है कि everyone was trying to reach God, but nobody knew where God is ना. That was the situation. Only Judaism सबको ही ये चाहते हैं कि ईश्वर का पहुँचे, लेकिन ईश्वर को नहीं पहुँच पाते हैं. So that was the situation. So at this time there were many ethical standards, the philosophies and ethical standards were given, but they were analyzing the problem, but they could not find the answer. They were analyzing the issues, the evils, but they could not find a solution for the evil. So this was the situation. Then only Judaism was a revealed religion. So they understood that God has come to voluntarily, He has entered into the world of human and has disclosed. यानी जुडाइज्म विश्वास केवल जुडाइज्म में ये विश्वास था कि ईश्वर हमारे दुनिया में आए, हमारे उनकी तरफ से, ईश्वर की तरफ से voluntarily एक initiation is taken and He has revealed. So we can know God only as much as God reveals to us. No? ईश्वर को इतना हम लोग केवल इतना ही जान सकते हैं जितना ईश्वर हमको बताएगा, उससे ज्यादा नहीं. इसलिए ये सब ईश्वर का प्रिपरेशन ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर जितने बताते हैं उतने हमको मालूम है. अभी हमको इतना इसका वैल्यू हम नहीं समझते हैं, क्योंकि जब से हम लोग बच्चे थे तभी हम सुनते हैं, विश्वास के बारे में पढ़ाया गया, सुनाए गए, हमारे घर में बोलते हैं, हम जीते हैं. इसलिए शायद हमको इतना इसका कीमत हम नहीं समझते हैं ना. We take it for granted that we are Christians, but we have to pay a price for knowing God. And unless God, जब तक ये ईश्वर हमको नहीं समझाते हैं, अपने बारे में नहीं बताते हैं, हम नहीं समझ सकते. केवल Judaism knew that it was God was revealing, and it had some clarity of sin and salvation. Even Judaism also did not know, it was obscure, not very clear. कैसे कौन चाहे salvation कौन चाहे ये उनको भी नहीं पता उसी समय में. और paganism, there was pagan religion. Paganism was a parody of whatever was the religion, parody of original truth. So original revelation God gave to man. So in this way there was a kind of confusion with regard to religious practices, lives, no, faith के बारे में कोई clarity नहीं था ना उस समय में. So all religions, सभी religion में बहुत rituals था, teachings था, लेकिन जो सही रास्ता जो देना था वो नहीं आया है. So the light of God is clouded like fanciful legends. So many legends where the stories are there, but no clarity. Nobody has got a clarity. So human beings generally lost a sense of joy. What is the real joy? They lost a sense. उनका प्रत्याशा, उनका joy, उनका happiness, the worth of human life and all was not very clear. Okay, that was the situation. In this we can find two types of religious thought and practice that was. तो दो प्रकार का religious way of life, religious practices. One is Palestinian Judaism. Palestinian Judaism is Judaism that flourished in Palestine, that grew up in Palestine. जो पालस्तीना में बढ़ते आए Palestinian Judaism, यहूदी धर्म. तो इसमें the life of Jesus and development of church in Jerusalem. So all these four gospels, the situation what is said is coming from the Judaism. So situation of the यहूदियों का ना Acts of the Apostles. प्रेरित चरित्र का आधा भी यहूदी, उनका कॉन्टेक्स्ट यहूदी है, चार गॉस्पेल का भी, सुसमाचार का भी यहूदी कॉन्टेक्स्ट है. तो
So it has come in Palestinian Judaism. So they were all men यहूदी धर्म का ना, तो उसका अभी आप जो बताते हैं और आपका फ्रेंड जो another religion, when they speak, when they behave, even though we are not intending to communicate that, naturally it comes out. Now what we believe, it comes out. So also these writers, when they Hellenes means Greek culture का, तो इसमें ग्रीक कल्चर में और ग्रीक वर्ल्ड में सुसमाचार फैला गया जब संत पौलुस सुसमाचार यीशु के बारे में कहने लगे और सुसमाचार फैला के उसका प्रवचन करते हुए कई ग्रीक वर्ल्ड में गया था. एक हेलेनिज्म began to come in Christianity, Christian faith. So it is by the preaching of Paul and work of Paul, the Hellenistic culture came into. Paul also, a man, was brought up in a Hellenistic background, so that also has affected. That's why इसलिए उसको how we say pagan background, Hellenistic and pagan background. So that such backgrounds he could accept or understand the people's situation and then he could respond to them. Okay, so there are two contexts. This also we can find in our text. Now, religious thought and practices of that time, Palestinian Judaistic practices at that time resulted in several institutions like synagogues, Sanhedrin, parties. These are only read in our Bible, no? Yes. Synagogues, Sanhedrin, parties, Pharisees, Sadducees, feast. So these are feasts. There are Pascha, then Pentecost. These are all from Old Testament only. Or Hanukkah, the dedication, feast of dedication. These are all, Jesus takes them and transforms them. He tells that now the new meaning, that Christ is the temple. Christ, now we will find that. We will come to that. Judaism, Yehudi Dharma, theocentric, God-centered religion. So they are more, they were not very open as Hellenistic. They were very open for any cultures, any religion. In our situation also, we can find people who are open to other cultures and some are not open. So this was the situation. Greek culture was open to anything that comes new. So that's why Paul could easily, Saint Paul could easily go and preach the good news in the larger Greek world. Let us also look some of the religious groups that were there in Roman period. Roman period यानी first century when Jesus came, no? First century AD. Towards the end of the first century BC and first century AD also. So there were different groups or parties called heresies or parties, sects, schools of thought, etc. Like Pharisees, Sadducees, Essenes. These all these groups, ये सब group मसीहा का waiting कर रहे हैं ना? So in the jar में थे. So these three are the main important groups identified the religious groups. जब हमको उसमें सुसमाचार में देखते हैं इन groups को. So there is another one called Zealot. Simon the Zealot. We read in the Gospel also, no? Zealot. So we will see what are these Zealots are the group that were they want to overthrow the Roman rule. There is also reason for that. So let us look at Pharisees. Pharisees essentially were a lay movement because when priests were close to holiness, isn't it? Priests were considered to be holy and ये ईश्वर का पास जैसा कुछ नजदीक था. तो lay people कैसे ईश्वर का आज भी हम लोग सोचेंगे. These religious they are close. What about lay people? So this is a lay movement that came in the Judaism. They wanted to have a strict observance of the law. Torah यानी पवित्र वेद का को strict रूप से
Jeekar, Pavitra Jeevan Vidakar. Hasidi means pious one, pious life. They were to live a pious. That is the origin of these Pharisees. Probably they are coming from Seleucid time, the Greek time onwards. You have heard about a Maccabean revolt, no? Maccabees, Father Maccabees, Second Maccabees book, no? So that is a revolt against the Hellenistic culture that was coming on Israel. Hellenistic culture was imposed by Hellenistic Antiochus Epiphanes IV. So this was it was detrimental. यानी इतना यहूदी धर्म के लिए खतरनाक था क्योंकि ये ग्रीक वर्ल्ड का इतना प्रभाव होता है कि religious life of Judaism was getting disintegrated, no? Getting broken down. So they were coming, Maccabees, in order to protect the religious life, Maccabees, Mattathias and his son, they are Maccabees, or Hasmoneans, they later called them. They come to protect religious. From this group, these Hasidians or Pharisees are originally they are the group that supported the Maccabees. Later on, they remained as like a pious group in living the Torah. Torah means पवित्र ग्रंथ ना पुराना विधान. हम पुराना विधान इसलिए बोलते हैं क्योंकि नया विधान हमारे पास है. उनके लिए उन लोग उनको बाइबल को तानक बोलते हैं. Torah नहीं के तानक बोलते हैं. So वो पवित्र वचन जीकर a pious life वही है उनका. Then this were against Pharisees were against Roman rule. They did not support. And there is another group we called Sadducees, Sadducei. They were more. These Sadducees Pharisees are middle class group. Sadducees are coming from the elite group, rich aristocratic group. Then they supported Roman rule. They supported Roman rule for their motive. Here we have that's why they are always in coming conflict, Pharisees and in regard to their faith. In the Bible we have texts like that. They come in conflict between them in regard to their ideologies. These people they gave more importance to Torah. Torah means Bible. Their Bible, the law, 5 books of Moses are called Pentateuch. What we call Pentateuch, they call Torah or law, or 5 books of Moses. They believed that truth of Torah is timeless. No? Torah is for all time, is timeless. Therefore, we need to apply it into context. They want, according to changing time, we have to interpret. So there came so many interpretations of the Torah, and all these interpretations also they regard very strictly. They follow very strictly. So that's why Jesus, when he came, he was speaking, breaking the law. He's not breaking the law. Actual law he is not breaking. He is only breaking the interpretation given to the law, which are wrong, which are not the original. Law is good. And it is coming from God. God only gave, the 10 Commandments and the Torah is coming from God. But later on, this group has given so much of importance to the interpretations, and then this interpretation became equal to the book itself. So that Jesus, that's why, Jesus teaches in the Matthew's Gospel, tooth for tooth, eye for eye. That is the original. That was not the original, but later on that came. Sabbath is actually for the rest. God meant for original intention of Sabbath. Sabbath का original intention ये था कि हम first of all it is said that God rested. विश्राम दिवस. Yeah, विश्राम दिवस. First of all ये ईश्वर रेस्ट किया. और दूसरा मतलब ये कि मिस्र देश में उन लोगों ने बहुत मेहनत किया, उनका विश्राम नहीं मिला, तो ईश्वर जब उसको वहाँ से बाहर जाते समय कहते हैं ये विश्राम दिवस होगा, तुम्हारे घराने के सब कोई ना, और तुम्हारे जानवर तुम्हारा सब कोई, तुम्हारे आसपास रहने वाले विदेशी भी ये विश्राम
you will not become slave of work. That's so human beings should never become slave to work. And God has freed us from everything that enslaves us, and He does not want us to go back to that slavery. That was intention of a Sabbath. But ये उन लोगों ने इतना व्याख्या दिया और उसको पूरा मानते हैं, strict रूप से. So Pharisees brought a complex tradition, and this become a heavy burden on the people. Okay, so that was the situation. So such rules Jesus was breaking. Sometimes we can get confused. People ask, Jesus also did that, so why can't we do? No, Jesus also broke the law. No, that is not the original. It is not the original law Jesus broke. The Pharisaic interpretation of the law. Pharisees and then there is another group, scribes. Scribe यानी जो लिखते हैं ना, पवित्र ग्रंथ का लिखते हैं, उसको कॉपी करते हैं. उनका काम है पवित्र ग्रंथ को लिखना, जो कॉपी करना, पवित्र ग्रंथ का कॉपी बनाना. तो वही उनका scribe. Later on, scribes were teaching the word. The interpretation is given by the scribe, and the Pharisees follow that. So they get all the interpretation, all the teaching from the scribes only. They were. These Pharisees, they were not able to accept any modern teachings like angels, resurrection, resurrection of the dead. They did not have. According to the Jewish understanding, when a man, जब एक आदमी, एक righteous person जब मरते हैं, वो शियोल जाते हैं, और उसके बाद में कुछ निर्धारित समय तक righteous person and unrighteous person cannot be equally destroyed, isn't it? भले आदमी या बुरे आदमी दोनों एक तरह का रिवॉर्ड नहीं होगा. इसलिए ये विश्वास करते हैं कि उनमें से कुछ ये धर्मी लोग वापस आएंगे, पुनर्जीवन जिएंगे. पुनर्जीवन मतलब जीवित, फिर से जीवित रहेंगे. तो वही एक विश्वास था उनका. ये तरह का विश्वास. फिर हम लोग मैक्काबीज, ओल्ड टेस्टामेंट में केवल हम लोग मैक्काबीज में और बुक ऑफ डैनियल हम लोग देखते हैं पुनर्जीवन में विश्वास. मृत लोग फिर जीवित आना, वो जीवित होना हम लोग उधर ही देखते हैं. लेकिन we get this understanding, and we get understanding and faith in the resurrection by the death of Jesus, resurrection of Jesus. In Jesus we are risen. Okay, that's what. So only there is a difference between the resurrection of Jesus and the rising. Jesus brought people to life, and they died after some time. No? So resurrection of human beings begin with Jesus only with the resurrection of Jesus. Okay. So this, they did not believe in angels, resurrection, etc. Then, and those who do not keep these laws, interpretations of the law, जो लोग इनका interpretation नहीं मानते हैं, फरीसी लोग इसको sinners, पापी जानते, पापी समझते हैं. इसलिए ये जब पापी बोलते हैं ना, when he was eating with the sinners, and so it is, we cannot say that they are what type of sin were they. Sometimes these interpretation they were not following. So this category is very large, sinners category, and including those who are not following. जो ये व्याख्या पवित्र ग्रंथ का जो व्याख्या दिया वो उनका पालन नहीं किया. Pharisees often came in conflict with Jesus. No? यीशु के जब भी यीशु कुछ बोलते थे, इन लोग यीशु को प्रश्न पूछ के आए थे, और अपने प्रश्न के द्वारा यीशु को ट्रिक, they want to trick Jesus and they want to find fault with Jesus. ये करना चाहता था. लेकिन Jesus, with whatever they bring, with that only Jesus gave an answer to them, and it become a chance for Jesus किसी फर्दर कुछ बोलने के लिए, आगे कुछ पढ़ाने के लिए यीशु उनका क्वेश्चन को यूज करते हैं. For example, they brought a woman caught in sin, they say. Now that Jesus take new explanations, new original interpretation of law Jesus brings. Another group was Sadducees. Sadducees, I told, they are the people. They are coming from Sadducite. Sadduc is the priest who served David and Solomon. Solomon और David का पुरोहित सादोक, उनका जो वंश से आता है उनको सदुकेई कहते हैं. So they are, I said already, they are aristocratic group, so
high class people, and they were not priests, but they were also wealthy priestly families. All Sadducees are not priests, but they were also from priests in that group. इनका Pharisees का strong hold law था, law interpretation and law. इनका strong hold क्या है? टेम्पल है. ये टेम्पल और उसका अड़ोस पड़ोस में उनके बारे में हमेशा उनका शुश्रूषा में सेवा में है सादुसी लोग. इन लोग इनका और दूसरा इम्पोर्टेंस है सेनेड्रिन. यीशु को सजा देने के लिए, मरने की सजा देने के लिए सेनेड्रिन बुलाया ना. सेनेड्रिन क्या हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा उनका सुप्रीम कोर्ट जैसा है. तो उनका सुप्रीम अथॉरिटी है लॉ इंटरप्रेट करने के लिए और नियम को लागू करने के लिए सबसे बड़ा court है Sanhedrin. तो ये they were the members of the Sanhedrin, the Sadducees. I skip, okay. This Sadducees group they supported Romans. They wanted to because for their own purposes they ये Roman साम्राज्य का support करते थे. Because they want to have a cosmopolitan rule or universal rule. Pharisees also, this Sadducees emphasized freedom, human freedom and responsibility, and God's sovereignty. So this is generally the difference between Pharisees and Sadducees. Those who they have one group has no faith in the resurrection, another group has. Afterlife, there is no. Pharisees believe in afterlife, Sadducees do not. ये था तीसरा zealots, जो Pharisees के जैसा है, लेकिन वो रोमन रूल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं ईश्वर ही उनका राजा है, तो ईश्वर के अलावा और किसी का राज्य लेना ईश्वर का विरुद्ध है. So they wanted to, इसलिए इनको ये रोमन साम्राज्य को गिराना, उसको हटाना, वही इसके लिए वो आयुध लिया, आयुध ना, युद्ध करते थे, guerrilla war. They were conducting guerrilla war to chase Roman or overthrow Roman power. Another group, everybody wanted to have Messiah's rule, ना, Messiah का और मसीहा का राज्य और समय और उसका प्रतीक्षा करते. तीसरा चौथा है ये यसीन कम्युनिटी, जो भी उनके ईश्वर का इस मसीहा का इंतजार में थे. इन लोग क्या किया, वो वहाँ से वो समुदाय से अलग रहकर, क्योंकि समुदाय में यहूदी समुदाय में सब उनका नजर से देखें तो विश्वास नहीं है, इसलिए लोग उधर से बाहर गया, तौरा पढ़ने में, लिखने में, कॉपी करने में, उनका जीने में उनका समय पूरा बिताया. तो वैसा ग्रुप था एसीन्स. हमारा बाइबल का हमारा जो भी ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट इसका मैन्युस्क्रिप्ट उसका पढ़ने के लिए बहुत मदद किया है. कुमरान स्क्रॉल्स समझा जाता है कि इन लोगों ने कॉपी कर कुमरान यानी डेड सी सुना है ना, डेड सी के किनारे पे उन लोग जी रहा था, उनके ग्रुप में जी रहा था. इन लोगों ने उधर उसका काम था बाइबल पढ़ना और कॉपी करना. तो हमको पूरा ओल्ड टेस्टमेंट का पूरा किताबों का कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट ना वहाँ से मिला है. So it's a very great contribution of these people for the spread of the word of God. I just want to take another one, a little bit of geography and feast, because it's time now. Land.
began to be written down, spread in the beginning. Now we have here we have Israel, the land of Jesus, Palestine. It comes here. Then good news spread to Asia. Asia means not our Asian continent. Asia Minor we read in English because it is said Asia Minor लिखा गया है क्योंकि continent Asia है. इसका फर्क देखने के लिए लिखा गया है. हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है तो ये नहीं है, ये एशिया माइनर है. और ग्रीस, इटली, these are the areas where good news spread in the first century. Okay, cities of the New Testament. This I already told. So this is the land of Jesus, Palestine. Okay. See, we have here either Galilee, top, Samaria, and Judea. And Jesus' birth was here in Bethlehem. Okay. And then Jesus go to Egypt here down. Okay. Egypt में रहा ना 12 साल तक. इसके बाद में नाजरत जाके जिया इधर ऊपर गलीली में. ओके. फिर वहां से गलीली में मिनिस्ट्री, ईश्वर क्राइस्ट का मिनिस्ट्री गलीली में है ना. वह इसके बाद में यहाँ से इधर मिनिस्ट्री करते अकॉर्डिंग टू लूक्स गॉस्पेल. he came down and to one journey. एक पूरा जिंदगी पूरा मिनिस्ट्री का समय पूरा उनका एक जर्नी था. जुड़ाया तक आया वहाँ जेरूसलेम में जीसस डेथ यीशु का मरण, पीड़ा सगर और मरण जेरूसलेम. और इसके बाद में भी हम इम्माउस शिष्यगण जा रहा था. We'll just see what are the important cities in the gospel. Boundaries. If we look in the boundaries, first of all, Mediterranean in the west. This is Mediterranean Sea, west. East Transjordan, Jordan के उस पार ना, उस पार ट्रांसजॉर्डन होते हैं. और ऊपर इधर माउंटेन्स है, Mount Hermon and Mount Syrian. So these are the mountains here. This is the southern boundary of Palestine, and here we have last southwest boundary. North boundary, no? North here, north. This is Hermon, and then here we have Egypt, and this is Dead Sea, and Dead Sea area. This is another the boundary. So this is the land of Palestine. Actually, we have reached the time. I'll just show this and finish. So this was the land was divided into two kingdoms. Now, and after David's time, it was Solomon's time. It was divided into Samaria and Judea. So later on, Samaria fell first, and then Judea also. So what is Jesus' time? The land was Galilee, Samaria, and Judea. And Samaritan story we will come to when I teach John. I will share with you. Then time, cities and all finished. I'll just skip through and I will say some of the keys. These are the cities and it's important. Not really. Father, it's time. Yes.